हॉरर क्लिप्स। आज हम लोग हॉरर क्लिप्स देखेंगे। प्लीज बच्चे ये वीडियो ना देखें। It's late at night when a girl named Pershka records a video in her kitchen. The purpose of the video is to show an ice machine that she recently purchased, as there's something about it that creeps her out. The ice maker, according to her, makes a very strange noise during the late hours of the night. So one night, as the ice machine makes its unusual noise, Pershka heads over to the kitchen to record the sound. But as she records this video, something pretty creepy is caught on camera. भाई मुझे पहले ये बताओ, जिसके घर में ऐसा किचन होगा, भाई सॉरी टू से मैं दिन में भी मिलने नहीं आऊंगा। अबे ऐसा किचन, जिसका किचन पर्दे हैं, भाई मैं नहीं आऊंगा। भाई ऐसा किचन तो देख के फट जाएगी। अरे यार वीडियो देखते हैं। What was supposed to be a short, random video turned out to be a terrifying clip that Pershka has recently taken down for unknown reasons. She didn't say why she took down the clip, but it seems that the video itself says it all. Have a look. ओए मजाक नहीं, मजाक नहीं। Like a scene out of a horror movie, Pershka Oi. walks into the kitchen and captures for just a मुझे डर लग रहा है भाई। अबे यार second the figure of a little girl. Even creepier is that whoever this was just disappears as soon as the lights turn on. It's for this reason that viewers मत जाओ विदेश पढ़ने। अब भाई ये सब भारी हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा। कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना गाइस हम लोग जा रहे हैं विदेश पढ़ने, जा रहे हैं कूल बन के एकदम। अरे भाई भाई she had taken down the clip, as otherwise it would continue to remind her of this disturbing incident. Whatever was captured has left her extremely unsettled. Even though this video was taken a few years ago, it is still unknown as to whether or not Pershka had captured something paranormal on camera. एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक भाई। In the early 2000s, there used to be an abandoned asylum in Massachusetts known as Danvers State Hospital. Before shutting down in 1992, the asylum had an estimate of 3,000 patients, all of whom were severely mentally ill and poorly treated. Nurses who used to work here recall seeing horrifying things that continue to haunt them to this day. From patients walking around in their own filth due to a lack of basic hygiene, to patients receiving forced lobotomies that would often leave them in a much worse state than before. Employees of the Danvers State Hospital are haunted by these terrible memories. However, aside from the past, the asylum is infamous for being extremely creepy. After shutting down in 1992, teens would come here after hearing rumors that the building was haunted. Although this next video wasn't taken by a trespassing teen. no भाई, ओह हेल नो मैन। अबे बच्चे जाते भी थे, क्यों? अरे क्यों? ऐसी बिल्डिंग की मैं फोटो भी ना देखूं, पर चलो अभी तो वीडियो ही देख रहा हूँ भाई। अरे It was taken by a curious security guard back in 2000 whose job was to look after the historic building. But little did he know that he would capture something very strange while exploring the basement of the asylum. हिम्मत कहाँ से पड़ती है भाई? एक ईयरफोन निकालो भाई, मेरी हालत टाइट हो जाएगी। Hey. It's a bit hard to see at first, but as the night guard pans the camera to a room inside the basement, a shadowy figure can be seen moving slowly inside. The guard doesn't notice the figure until much later after rewatching the footage. Naturally, he was left shaken up after seeing what appears to be a slender-looking silhouette walking further into the room as if trying to... कौन सा गार्ड ऐसे घूमता है बेसमेंट में? अरे भाई 2 रुपए भी ज्यादा मिलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई तुम लाइफ टाइम के लिए खाना फ्री, रेंट फ्री, सब फ्री। अरे अजी मैं घंटा नहीं जाऊं? अबे अकेले घूम रहा है, तेनू डर नहीं लगता सी? What is this bro? ठीक है, सीरियस मूड। hide from him.
Mind you, the basement of this building is completely inaccessible to outsiders, so कोई there's no way पागल that a आदमी छोड़ गया trespasser होगा could वहीं have been पे। inside. maybe It's no wonder that viewers believe something supernatural was captured. But of course, the question is begged. भाई नंबर 7 वीडियो ऐसी नंबर 1 में था भैया। भैया ये वीडियो डल भी पाएगी, ठीक है। Just what exactly was caught on camera? Whether ghost or not, it remains a mystery as to what was captured. बैकग्राउंड म्यूजिक Now, है the बड़ा। following video was submitted to me by someone who has no idea where the video came from. Its original source is unknown, but despite its mysterious origins, the clip is sufficiently creepy on its own. The video seems to have come from a CCTV camera that was placed in front of a driveway. वहीं से आएगी Everything और कहाँ appears से to be आएगी? normal until you notice the What the fuck up भाई, ये क्या है? अरे भाई ठीक है। कोई क्या कमेंट में आ रहा भाई तो बिल्कुल डरावना नहीं है भाई, हमें तो डर ही नहीं लगा। भैया रात के 4 बज रहे, कोई नहीं है घर में, एक लाइट जलाया हूँ बस। मुझे डर पता नहीं क्यों लग रहा है कि पीछे से ना दबोच दे। The two strangers that are standing outside the owner's home. They come into view as the owner beams them with the car headlights, खड़े क्यों हैं एक presumably जगह? as an attempt to scare them off. This, however, doesn't work. They're still there, while eerily ऐसे। standing still. It is at this point, though, where things get really creepy. Watch. भाई चढ़ा दे गाड़ी, चढ़ा दे गाड़ी, चढ़ा दे, लेके जा, उड़ा उड़ा, बंदूक से उड़ा, बंदूक से उड़ा। जा ही क्यों रहा है? पीछे आ भाई। अरे आ, अपना आदमी है भाई, तू आ, लौट के आ, लौट के आ। एक जना तो आए सेफ। भाई अभी भी खड़े हैं। अबे यार मैं नहीं सो पाऊंगा भाई, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आज यार। लोग खुश होते हैं कि वो होम अलोन है, होम अलोन हूँ आज तो। मैं तो भाई फंस गया। टॉप 2 दिखाओ भाई हमें, टॉप 2। In the following video, a man is alone at home when he realizes that the lights in his basement won't turn on. अबे भाई Feeling a bit scared, he walks down into the ऐसा cellar घर with किसका caution. हो? According to him, it's not the darkness that scares him, but the basement itself. रहना ही नहीं ऐसे From घर time to में। time, noises such as footsteps or the sound of someone walking back and forth can be heard coming from inside. This often happens when no one else is at home. Now, the man had this experience previously, but it was at his job. He works as a grave digger, and oftentimes, Grave after digger? placing a coffin inside a freshly dug grave, he would feel भाई as though इसके someone पीछे तो else was भूत ही there with पड़ना था him. भाई, कौन ही पड़ता है Although इसके unable पीछे? to explain this unusual sensation, it would be the following incident that leaves him extremely baffled. The man checks the basement to see why the lights aren't turning on, but he checks carefully. यार मजाक नहीं भाई, क्या जोक आई थी भाई। मैं कहने वाला था कि ग्रेव से बंदा आ गया, ग्रेव की प्रॉपर्टी के पेपर मांग। सॉरी अबे यार मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, शिट भाई। Because, as he states, he just heard the sound of footsteps walking about as though someone is down there. Be sure to pay close attention, as what was captured wasn't noticed until looking closely. This is what was caught. At the moment, in the basement, I swear I keep hearing someone walk. I don't know exactly what it is, but अबे it's kind of creepy. Laundry room still has power, so that's पीछे good. लॉबी में कोई था But the भाई। rest of the basement's power ऐसा is completely out, which is very strange. भाई I'm not sure नहीं था क्या, मेरा वहम होगा। what that noise was, but I don't know. I'm home alone right now, so we'll see, I guess. भाई अबे कैसा घर है? आधा अंधेरा है, आधा सुबह लाइट चल रही है, रोशनी है। ठीक है। No, nothing back there. I don't know. There's been a lot of strange things happening. Now it happens real fast, but in case you missed it, if you हाँ, look मैंने देख closely लिया। as the man pans the camera to the bathroom, you can see what appears to be a strange shadow-like figure standing. भाई ऐसे घर में रहना क्या, ऐसे घर में जाना भी नहीं है भाई। ये कैसे घर है? अब रात हो रही है कि दिन हो रही भाई? Completely still inside a bathtub. It doesn't appear to be moving at all, as if who, or whatever this was, had been entirely stiff.
हेलो Even मैं नहाने creepier आया is होगा that when लग the रहा man है। returns to the bathroom, Sorry. the figure is no longer there. Given its strange appearance and sudden disappearance, the man thinks that something supernatural was captured. But as always, I'll leave it to you to come up with your own conclusions. अरे Could it be क्या that someone had broken कंक्लूजन in and quickly hid away from the man? भाई नंबर 1 आने Or वाला might है। this be something completely different? If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos for हेलो मैन पागल हो गया भाई। अबे मस्ती मजाक नहीं। ईमेल आईडी भी नहीं देखूंगा मैं। आगे चलो। नंबर 1 This ओए। next video was taken inside an old restaurant that is currently being renovated. अबे The इसमें क्या person डर recording लगेगा? this doesn't say कुछ where दिन हो रही exactly है। this footage was taken, and for good reason. Aside from privacy, this place isn't safe to be in. It's not just the construction that makes it अबे unsafe, इसमें तो डर ही but नहीं लग रहा। rather कुछ दिन हो something रही है। else. इसमें तो मैं भी घूमूंगा For just an अकेले। idea of why that is, the owners of the restaurant are deeply afraid of the strange things that have happened here. Now, the person recording this एक is तो someone who I लाइट क्यों नहीं featured होती in a previous हाँ। video. They too have been experiencing strange happenings and believe that it won't stop unless they move out from home. Given their Oi. experience with this unusual phenomenon, they were invited to see this restaurant before it's completely demolished. Although expecting to see something unusual, nothing happens. That is, until much later when they head over to the back of the restaurant. What happens then is terrifying to say the least. This is what they caught. क्या बोतल रखी हुई थी? Oh, it's cold right here. Stay that away. Hello? I'm not going up हेलो there. क्या बोल रहा है भाई? सोचो किसी ने हेलो का रिप्लाई दे दिया। Back there. ठीक है। Oh wow, it is really cold right here. What was that? कौन? मस्ती नहीं। No. ओए भाई भागना। I don't think it's happy we're here. शेट भाई गए बेटा गए। आज तो नहीं सो पाऊंगा बॉस। हो गया काम, हो गया मैटर, हो गया तगड़ा वाला। तुम लोग की तो मस्ती हो गई। अपन तो गए। नहीं देखना आ गया यार अपने। मुझे इंडिया के भूत दिखाओ भाई। बाहर के तो फाड़ के रख दिए भाई। हटाओ भाई। ओए आर्मी। ओए ये कैसा भूत है? क्या अभी चलना सीखा है? कल ही पैदा हुआ है भूत तो। अरे बाप रे भाई। ओए भूत हटाओ। ये वीडियो का टॉपिक हटाओ। मुझे कोई ये बताओ, भूत भगाने के लिए बर्थडे में जो गन चलाते हैं छपरी लोग, ये वो क्यों चला रहे हैं? अबे भूत को क्या तुम पागल समझे हो? ओए वो लड्डू की उसका आधा खा लो, चुका हुआ है बाहर ले पकड़ने की कोशिश करते हैं उसको। आपने भी जानवर उसके पास ना बाहर आ रहा है, कभी भी हमला कर सकता है। बाहर आ रहा है, क्या चल रहा है? क्या तो उसको बाहर आने दो। ये कैसा भूत है? अबे भाई लग गई उसके, लग गई भाई, लग गई। पकड़ो 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 पकड़ो। मारो 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 मारो। ओए आर्मी सारी भाग गए। अबे भाई मैं क्या आदमी हूँ भाई। मैं ये फेक वीडियो नहीं समझ पाया भाई। इनका भूत तो नाइकी के जूते पहन रहा है। हेलो मैन, अपन स्पार्क्स के पहन रहे हैं, भूत नाइकी के पहन रहे हैं। इस रिजॉर्ट के मैनेजर है। कहिए। वो रूम नंबर 2 से कुछ अजीब सी आवाजें ये कौन से मर्द की आवाज होती है? जिगर में दम चाहिए बेटे। हेलो मैम ऐसे बोलना चाहिए भाई। ये कैसे? हेलो मैम ये कैसे बोल रहा है? आपने वहाँ झांक कर तो नहीं देखा? बिल्कुल देखा। क्यों, क्या हुआ? 8 साल पहले वहाँ पर एक कपल रहने आए थे, रोशनी और रमन। एक आदमी दरवाजे से रोशनी को स्टॉक किया करता था। जब रमन को ये बात पता चली तो उसने स्टॉकर को मारने की कोशिश की, लेकिन स्टॉकर भारी पड़ा। उसने उन दोनों की जान ले ली। मरने के बाद भी रमन और रोशनी उसी कमरे में रहते हैं और आज भी अगर उस कमरे में कोई झांकता है तो रमन उसकी जान ले लेता है रात 12 बजे। मुझे नहीं लगता। कोई बात नहीं, 12 बजे तुम रहना ही मत वहाँ पे, अगले दिन आना।
12 बजे तक वही नहीं मारेगा कैसे? सॉरी भाई, बहुत बचकान बात थी, मुझे डर लग रहा है कि कोई पीछे नजर ना आ जाए। गया कि मैं वहाँ झांक रहा था, क्योंकि जब मैंने वहाँ झांका तो वहाँ मुझे सिर्फ लाल रंग दिखाई दिया। रमन की लेफ्ट आई एकदम लाल है। 12 बजने में सिर्फ 50 सेकंड बाकी है, आप जल्दी भागिए यहाँ से। तो ये कौन है? रमन की पीए है क्या, जो भाई उसके साथ घूम रही है? इतना क्या डिटेल भाई? आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। आपका नाम? रोशनी। हेल नो मैन, अभी तो रात हो रही है, फिर रोशनी कहाँ है? अबे यार, ओए ओए ओए, ठीक है। मेरे पीछे तो आपने देख ही लिया होगा, यहाँ तो कोई है ही नहीं हाँ, नहीं है। और उस साइड भी कोई नहीं है। बाकी हाँ। यहाँ पर सबके घरों की लाइट्स भी ऑफ हैं और यहाँ पर मुझे ऑलरेडी एक नेगेटिव सी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि तो काय वीडियो बना रही हो? सोना जाके फिर। जब मैं यहाँ पर आई ना, एक धुआं सा मुझे ऑलरेडी धुएं की स्मेल आ रही है। वेप कर रही होगी। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो यहाँ कोई आग भी जलते हुए नहीं दिख रही है। भाई ये कैसा assumption हुआ? कोई कह रहा कि भाई रोड में डॉग ही नहीं दिखा रात को, ये कह रही है कि आग ही नहीं जलती हुई दिखी। अरे भाई ठीक है। ये का पोकेमोन कार्ड? सूजी ओरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। सूजी ओरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। जो ग्रैंड मी को ग्रांट मी बोल देगा उसके लिए तो भूत भी कहेगा रहने दो, नहीं आऊंगा। What is this bro? सूजी ओरा ग्रांट मी अ ट्रू सूजी का रिस्पॉन्स। हलवा, सूजी का हलवा। कोई है क्या वहाँ? इतना क्या शॉकिंग भाई। वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड बाथरूम करने गया था भाई, पीछे उसको देख के क्या डर गई। ये होता है भाई इंडियन वीडियोस देखने का नतीजा। पूरा जो इतना अच्छा खासा अमेरिकन हॉरर्स वीडियोस वी आर वाचिंग, सारा वेस्टिंग्स हो गई। डन फॉर टुडे गाइस। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे पीछे से आ रहा। पृथ्वी, अंबर, सात समंदर, सारी दुनिया मेरे